अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक ममी। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है द वंडर ऑफ द वर्ल्ड नो वन विजिटेड। तो भाई साहब, कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे यूनिक मंदिर जो एक ही पहाड़ को काट के ऊपर से काट के नीचे तक बनाया गया है। फॉरेनर है भाई साहब, विजिट करने जा रहे हैं। देखते हैं वीडियो और अपना रिजल्ट कर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Greetings from Aurangabad. Yes, we're on our way to one of the most magical sites here in all India. It's Ellora Caves. Yep, so we have hired a car for the day and we are going to see Ellora Caves along with one other site which is known as the Baby Taj, and we're going to take you along today. I am so wrapped. This is the thing I was most excited about for this trip to India, and we're finally here, so excited. All right, we've just got dropped off at the car park. Yep. Gonna make our way to the ticket office. And it was a really nice drive. A lot of like little smaller towns we went through. Again, double pricing. 2 tickets, please, madam. Yes, unfortunately. Can I be Indian for a day? Okay, thank you, madam. Right, so you get these tokens. If you lose these tokens, I saw it's 100 rupees to replace them, so make sure we put our token somewhere safe. Okay, so come with us while we show you these caves and some other sites around Aurangabad. And if you like what you see and you want to know more about what to book, how much it costs, and all of that information, stick around till the end. We can even see some of the original paint and artwork here. This site is from around 600 AD. Yeah, and because of the preservation of the carving and just the scale of it, it's one of the most famous rock temples in the world. It is right up there with what? Angkor, Yeah, Hegra, Petra. exactly, all the main ones. This is right up there with them. And yeah, But I it mean, doesn't get the attention the others It get. doesn't. That's what I was just going to say. And also, you know, the entrance fee is very reasonable whenever you consider you get into all the temples for that amount. There's 100 temples, but 34 that you can go into, all covered in that 600 rupee fee. And okay, there's quite a few people here, but not that many compared to most of the other ancient wonders of the world, or Yeah. ancient places and temples that you can go see. So I think it's highly underrated. It is, but India's difficult to travel in. It is. That said, if you're in a city and you're thinking you don't like India, look up Aurangabad and come here, because I think it could just change your mind. It could. Cave 16 is the most spectacular of the over 100 caves here at Ellora. The monument is the largest single rock excavation in the world. This particular temple was built by 8th century King Krishna I, and although these temples get little recognition, it's often been described as a wonder of the world by those that have studied the site. So one of the most incredible things about this site is that it was actually carved from the top down, which is very different from, let's say, Petra, which was carved from the front back. I think a much more difficult task to carve top down. I think so too. And guys, this might not be one of the wonders of the world, but it certainly feels like it should be being here. It does, doesn't it? Feels like it's worthy. Oh, definitely. Amazing.
and we're here at Buddhist cave number 10, and as you can see, this one is carved from the front back rather than the top down. Cave number 10 is one of the most magnificent caves here at Ellora. It's one of the Buddhist caves, and it was built in the 7th century. Cave 15. A vehicle of Shiva. Nandi. Nandi, Nandi. Nandi. Nandi is good Nandi. Yes. Fabulous visit to 3 of the caves there, Steph. So we went to 10, 15 and 16. Yes, and it was absolutely amazing. I'd say give yourself a good 3 hours here if you want to see basically the Buddhist and Hindu caves. Even longer if you want to go to the Jain ones because they're a bit further away. They seem to have an electric shuttle that runs sometimes, but it doesn't seem to run that often. No. So that's to get to the Jain temples. Absolutely amazing. Yeah, just ignore these guys too, that always want to sell you stuff in these sites, but we don't want to buy anything. So sorry, sir. No, thank you. Elephant like that. Isn't it? That's enough for us. All right, we'll pick you up again at the Baby Taj. Taj. So these are the shuttles that can take you to the Jain temples. I think you have to pay extra for the ticket for those. You can see behind me there's quite a crowd now. It's about 11:30, so come early or come closer to closing. If you come in the middle of the day, you're going to be joined by a lot of people. A lot of domestic A tourists. lot of domestic tourists. Still aren't that many international tourists that visit this site No, compared to a lot of other places. yeah. Okay, I'm going this one alone. I'm here at the tomb of Bibi Ka Maqbara, which is colloquially known as the Baby Taj, and you're probably going to see why in a moment. So it says we need a camera ticket, but I'm not sure. So I'm going to put this away whenever I go in. It was 300 rupees for the ticket to come in. And this is the main entry gate. Here we are. You can probably see why it's called the Mini Taj. If you look closely, you can see that money has been thrown down as some sort of offering. What do you think? Is this as good as the Taj without the crowds? 300 rupee entrance fee, that's about $5, not even. So well worth it. I wouldn't say it's as impressive as the Taj Mahal, but it's definitely an impressive site. It's beautiful and well worth the stopover if you're here in Aurangabad. All right, guys, we've traded our nice car for a hot and dusty tuk-tuk. Now that car this morning was 1,600 rupees, which is about $20. And I'd say for the length of time he waited and as far as he went, that is excellent value. We booked it through the Green Olive Hotel. Can also highly recommend that hotel for a nice 3-star, no frills stay. But they booked the car for us. It was a great price. We've seen it other places for $2,000, so it definitely was a good price. Now you've had a hot and dusty day out looking at all the sites. It's time to get some food, right? Well, we've got a couple of places we can recommend. The first is Bhuj Thali. Is that right? Did I say Bhuj? Bhuj Thali, which we went to last night. I will just drop a few clips in here. Excellent thali, wonderful food. We can highly recommend that for 320 per plate per thali. And now we're going to another famous place here in Aurangabad called Hotel Tuba. Made it. We made it to Hotel Tuba. Let's see what they got on offer. Hi guys. This one is
Yes, not for the vegetarians. Nor the faint of heart. I got my dog food here. Alright. You are one brave girl. What do you recommend? What is best? No English. No English. Chicken tuba special. They've got beef here supposedly. I wouldn't have beef. What's safe for stomach? Which one good? Kya acha hai? Kya acha hai? Tuba special. Chicken tuba special. Okay. All right. So we got Singapore. Singapore. Okay, I think we'll have the half chicken tuba special. चिकन तुम आप दे It's good? Yep. Chicken tuba special is good? हाँ स्पेशल And chicken is fresh? फ्रेश फ्रेश No. No problem. Okay. And chicken tuba special. Do I need something with it, like roti or Naan? 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 नान नो Naan no? Naan? Okay. I guess I'll just have the chicken tuba special then. चिकन तुम लगा और उसके साथ है ना एक रुमाली में एक तंदूरी ला नहीं रोटी में सिर्फ इतना दो ला Okay. Gotcha. All right. Chicken tuba special it is. Well, the tuba special has arrived. Yep. And Susan doesn't seem to want to try it, so I guess it's all mine. We can see here there's got some beetroot on there. It also has some cucumber. Makes me wonder if it's a little bit spicy with the cucumber on it. Is that Sure, cheese? it's spicy. Yes. A little bit of egg on the side, and then chicken in some sort of sauce, some sauce on the side, and some naan. It's a very old egg. Dig in. Go for it, Steph. Nice hot naan. Always a fan of naan. It looks like it's still on the bone, so this might be hard for me to eat. So grab it and put it on your plate first. Alright, got cashews and almonds and stuff on there as well. This is in the Muslim quarter, so this is actually a family room. We weren't allowed to sit in the main restaurant. So we're here with the kids and the women. Okay, finally got a piece. Alright, let me try this. Delicious. Delicious how? Chicken's really tender. It's got a spicy sauce on it, but it's not so spicy. This naan is fresh, hot and fresh. And so it just makes this nice combination of flavors. Really good. But I have trouble eating with my hands. Sorry for those, I'm not supposed to use my left hand for anything, but I can't manage with just one hand, so. It's a It's lovely like a sauce. nahari. Yeah. The temperature is really hot. So that's just come fresh out of a big pot, I would say. Spicy? Really nice. I'd say medium spicy by Indian standards. Probably too spicy for Susan. Well, Steph, you did a good job. I did as best I could. Had absolutely no help from my wing woman. So I did as best as I could. It is 240 rupees for this, including the water. And so that's about $3 US. And definitely this was enough for two. So yeah, what a cheap meal. And I thought it was delicious. Don't mind Susan. No English, by the way, so just have to communicate by pointing. Well done. All right, so you've now seen what there is to do around
Aurangabad. There are Where to actually stay? where to stay. There are actually some other caves and things that you can go to, but we just didn't have time, so that's up to you if you're not caved out. After Ellora, there's also a few others you can go to. Ajanta and Aurangabad actually has some caves right outside the limit. That's available. And you've seen 2 places to eat, so I can recommend either of these. If you're not feeling like, adventurous, the Thali, I think, is something not very adventurous. Yeah. If you're feeling a little bit more adventurous, grab a tuk-tuk, come to the Muslim quarter, try something like this at Tuba Hotel. Yep, and this was 24 hours in Aurangabad. Yeah, so I've really enjoyed it, and so I hope that you guys have enjoyed seeing it. And if you're not sure where to come on your next time when you're coming to India, I say check out Aurangabad and check out those caves and see how amazing they are. Yeah, definitely. Ellora number 16, 10 and 15. Fantastic, weren't they? Yeah, amazing. All right. Winner, girls and youths. We are. Bye Catch for you next now. time. चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। मैं तो कहता हूँ कि 15 मिनट की वीडियो थी, क्योंकि जो अलोरा केव की बात करें क्लास की, तो जितना वो कमाल का मंदिर था ना, उस लेवल का इन्होंने दिखाया नहीं। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि जिस लेवल का वो मंदिर बना हुआ ना, कम से कम 1-आधे घंटे की तो उस पे ही वीडियो बनती है। लेकिन ये है ना कि वो असल में सही तरीके से इनको थोड़ा ताजमहल को उसकी निकासी वगैरह दिखाते हाँ, हैं। सही थोड़ा बात। सा इतना सफर करके गई है तो थोड़ा सा अच्छे से देख पाते तो फिर भाई अच्छा लगता। असल में हो सकता है उन्होंने अच्छे से देखा हो। हाँ, ये भी है कि वीडियो कुछ ठीक लोग से जो है वो देखा। एंजॉय करने के लिए वो इतने शूट शूट थोड़ा किया होगा, जी। लेकिन इन्होंने एंजॉय किया होगा। देखा जाए तो भाई साहब, इसमें कोई दोहरी राय नहीं, कोई जो कैलाश मंदिर बने अपने आप में एक ना अजूबा है। बिल्कुल कि पहले नंबर तो बात ये कि पहाड़ को ऊपर से काट के किस लेवल की इंजीनियरिंग होगी और किस वक्त में वो छेनी थोड़ों के साथ काट के इसको बनाया गया है। भाई साहब जिस लेवल का ये मंदिर बना है ना, उस लेवल का ना दिखा नहीं पाए। एक एक चीज बारीकी से देखने लायक है। और ये मंदिर जिस तरह काट के ऊपर से अंदाजा लगाओ, काटा, फिर उसका मटेरियल नजदीक मिलता भी नहीं है। यार चलो इतने साल गुजर गए, लेकिन उस समय उसको वहां से निकालना कोई मशीनरी नहीं, मशीनरी भी नहीं है, इतने बड़े बड़े कोई पत्थर को काटना। मशीनरी नहीं है, सारा लेबर का काम है, हाथों से किया। लेबर भी वो बहुत ज्यादा है, वो अक्सर हमने देखा है ना। अब वो आपने देखा होगा कि वो भाले से वो मिट्टी में वो डिजाइनिंग करते हैं, वो चीजें बनाते हैं, वो हमने देखी है। लेकिन ये पत्थर को काटना, हर एक चीज जो है वो थोड़ी के छेनी थोड़ी के साथ काटनी, फिर उसको वहां से निकालना, शेप देनी बारीकी के साथ। और ये मेरे ख्याल में कोई मुगल बादशाह था, उसने इसको तोड़ने की भी कोशिश की। आधार पाई कि 3002 साल के लिए साल के लिए वो लगे रहे, उनसे इसका मैं कहता बाल भी बांका नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ कहता हूँ बना हुआ जो पत्थर का ना भाई। लो जी, तो जिन्होंने बनाया था तब भी तो पत्थर ही था मामू। इनके समय पत्थर हो गया तो उनके समय ये बनाना बहुत कोई थी। चीज बनाना मुश्किल है, तोड़ना तो बिल्कुल आसान है। हो सकता है जब वो बना रहे तो उस मजदूर को रोकने वाला तो कोई नहीं ना, वो बना रहे, जब तोड़ने वाले को रोकने वाले तो होंगे। आर्मी थी, उनकी हुकूमत थी। हुकूमत इधर उस मुसलमान हुक्मरान की थी, औरंगजेब पूरा का साल के 2 साल लगे। उसने अपने बंदे भेजे हुए थे कि इसको तोड़ो, लेकिन वो तोड़ नहीं पाए। सही। ये सिर्फ चंद मूर्तियों के कुछ फेस कर पाए, कुछ हाथी थे उनके सूंड बिगाड़ पाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। और लेकिन- उनकी महारत लेकिन दिखा ये रही भी थी, है। पूरे पहाड़ को काटा। अगर आप देखें ना, बिल्कुल पहाड़ के नीचे उनको पिलर दिए गए, फिर कैसी सपोर्ट। यार मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग का वो मैं अंदर कहता हूँ वो कमरे भी बनाए गए हैं ना, कमरे बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई। अच्छा, वो जो और देख रहे कि यहाँ पर एक चीज नोट करो कि यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं। गुंजाइश नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे सिर्फ चीज एक बार बननी है, अगर गलत हो गई तो उसको आप सही नहीं कर सकते। हाँ। सीढ़ियां बनाई गई, मूर्तियां बनाई अच्छा, गई। ये सीढ़ियों के सड़कों पर टेके वगैरह दी हाँ। गई थी, वो देख लेना उस हाँ, टाइम के यार हिसाब से। एक चीज को बारीकी के साथ बनाया गया भाई। और वो बैल देखा, नंदी जो बनाया गया है। अच्छा, इसमें भाई गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां वो भी दिखी, वो बड़ी थी मूर्तियां। तो ये मतलब
इसमें हो सकता है हिंदू मंदिर भी है और बुद्धिस्ट भी है, जैन भी, उनके भी कुछ ना कुछ हो। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में कितने 10 के कितने बोल रहे थे इस तरह के बने हुए। लेकिन भाई मैं कहता हूँ भाई बहुत कमाल का बनाया गया। और ये मैं कहता हूँ पता नहीं ताजमहल को किस वजह से वो दुनिया का अजूबा रख दिया। मैं कहता हूँ उससे तो ज्यादा ये चीज अजूबे वाली है। और है भी देखो कितनी पुरानी, ये बना हुआ बहुत पुराना है यार, हजारों साल पुरानी। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के। और खाने पीने की बात करें तो इन्होंने तो भाई वो बस नाम दे के चिकन दे के भगा लिया। और भाई यहाँ पे मैंने देखा कि अक्सर भाई कोई हिंदू लड़का होता तो इसकी इंग्लिश अच्छी होती। ये मुस्लिम भाई से हमारे दृश्य वाले है तो भाई नहीं ये रख है वाले है तो ये भी इंडियन ही ना भाई यार थे बिल्कुल इंडियन, हाँ, लेकिन ऊपर तो ना क्या सीखा इसमें? मुसलमान के इंडियन है तो साथ फिर- मध्य कम देते हैं ये इंडियन ही पहले है। वो इंडियन तो है। दूसरे पे ही है ना। आप एक तलीम के ऊपर थोड़ा सा आके आप कह रहे हैं ये हमारी तरह मुस्लिम है। मुद्रते वाले थे भाई, सीधी बात है। मुद्रते वाले थे कोई नहीं तू ऐसे बैठ ना। अच्छा उनके बॉस को भी नहीं आ रही। हाँ, उनके वो बोला गया ना फ्रेश है वेरी ना, फ्रेश, वो वेरी फ्रेश। ऐसे करता था पता नहीं कुछ सही तो मेरे। तो ठीक लेकिन है। खाना उनका टेस्टी था। हाँ, उन्होंने खाने की तारीफ भी की, ना भी करती तो और भाई प्राइस देखिए कितनी कम है। ये साला चीज हमको हजम नहीं हुई। सिर्फ 200 रुपए की, 220 रुपए 220 रुपए की की। 2 बंदे खाना खा रहे हैं। तो 220 वो भी इंडियन ही है ना भाई, हमारी तरफ तो काफी बढ़ जाएगा। और जितने भी 600-700 का किलो आ जाए। मतलब तो मतलब क्या अभी कम पैसे लेके खाना इतना ज्यादा देने का मकसद क्या है? क्या मकसद मेरे यहाँ पे? अच्छा तेरे क्या तो फ्री नहीं खिला सकते थे। उन्होंने विजिटर पाकिस्तान में तो फ्री खिलाते मेहमान। हर किसी को कोई नहीं खिलाता भाई। तो उधर भी हर किसी को इतना नहीं करते, ठोक के पैसा लेते हैं उधर भी। यार वो अकेले पाकिस्तान में हर तरफ रेट का फर्क भाई। हर तरफ आप इंडिया की ट्रिप करते रहे तो पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर देते हो। भाई इंडिया भी पैसे ठोक के लेते हैं। और काम नहीं है भाई साहब, ठोक के किसी वो थोड़ा सा दिखावा होगा, कहीं कुछ तो समझ के लेकर लिया होगा, वरना वो भी ज्यादा पैसे लेते हैं। बात कोई और है, वो ही मुझे मेरा मुंह ना खुलवाओ। 220 रुपए लिए। जो इंडियन भी करते हैं मुझे ना बुलवाओ। इधर वो हॉर्स राइडिंग वाला 5000 मांग रहा था। 5000। एक मिनट, अच्छा तू मुंह खोल के बता दे तू क्या काट देगा। मैं सारा कुछ बताऊंगा, फिर आपने बता। काटना दरमियान से काटना शुरू कर हम देना। नहीं काटेंगे, बताओ। महंगाई की बात कर रहे हैं। बताओ। महंगाई किधर ज्यादा है, उधर है कि इधर है? ओए आप मंदिर की करें जो टेंपल उसकी करें भाई, उधर ना जाओ। पाकिस्तान को पता बात करो। वीडियो में खाना नहीं आया और इतना तो खाए खाना पर ठीक है, खाया गया चले गए। पाकिस्तान को कोई मेरे सामने ऐसे ना किया कर। अच्छा, तुम्हारे सामने नहीं कर तकलीफ होती है। बड़ी तकलीफ होती है। गांधी की तरफ मेरा ईमान है, मेरा मुल्क। चलो अरे, हमारा नहीं और है। नहीं आपका, इसलिए आप करते हो। ऐसे ईमान का क्या करे भाई? आप मुनाफिकों का ईमान होना चाहिए। फेसबुक के ऊपर स्टेटमेंट है कि रमजान के अंदर जो भी चीजें बनाई जाती है वो शौक से खाई जाती है, और नीचे नहीं कहता पाकिस्तान भी रमजान में बना था। सही बात है। शौक से खा रहे हैं। हाँ, तो खा रहे हैं, खा रहे भूखे मर हैं। जाए। भाई साहब का ईमान खा रहे हैं। और थाली देखिए कितनी है, उसमें दी कौलियां क्या उस कौलियों में क्या था? सारा मिला के एक कौली बनती है। कितनी कौलियां दिखावे के लिए ये कर देते हैं। और 5 सबको मिला दे एक चम्मच बनती है। सलाद के अलग से पैसे लेते बात हैं कर रहे हैं। छोटा- अच्छा, हमारे पास सलाद के कितने लेते हैं? अरे, सलाद के साथ और जो चटनी वगैरह तो बात करो यार। नॉर्मल से होटल वीडियो से बाहर ना जाओ, वीडियो से बाहर ना जाओ। 50 से 100 रुपए सलाद का लेते हैं। 50 से 100 रुपया सलाद नहीं लेते। हैं। उधर भी सारा कुछ लेते, जूते भी उतार लेते, भी रखे जाओ पैसे बनना दो। उधर भी ऐसे ही है, इंडिया भी ऐसे करते हैं। भाई कोई नहीं सो रहा था। पाकिस्तान के पीछे वो लगे ना, हुए हैं। कोई बंदा सो बड़ा रहा था, निकाल रहा है कोई सो रहा बेचारे था, को तकलीफ हुई कोई है। बंदा सो रहा था, मौलवी मसले कर रहा था और मौलवी क़यामत की बात कर रहा था। तो किसी ने ऐसे ही उसको ना भाई जगा दिया। तो कहता है नारे लगाना शुरू हो गया भाई। तो सारे बंदे उसकी तरफ देखे, भाई मौलवी बंदों को मार रहा है, तू नारे जो वीडियो की मुद्दा बात आप उसके ऊपर ही करो ना। आप पाकिस्तान के बीच में क्यों लेके आ गए भाई? अरे यार कंपैरिजन करने से क्यों? नहीं कंपैरिजन बनती ही नहीं। किस लिहाज इधर से? जो है आप उधर तो बात ताजमहल की करो, इसकी टेंपल की करो। चलो सही है, ठीक है भाई। अब इतनी नफरत अच्छी नहीं थी, ठीक है भाई। हाँ, चलेंगे, ठीक है भाई। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।